Good afternoon, sir. Guru, good afternoon. You can start. Sir. Good afternoon, sir. Dear all, good afternoon, everyone. Respected senior colleagues and dear friends. I welcome you all for this webinar on the microbial disinfestation of food grains. I seek initially the permission from our convener, Dr. Nachiket Kotwaliwale, sir. Sir, shall I start? Yes. So as per our ICR tradition, generally we used to start our program with the ICR song. So I'm sharing my screen. Recording in progress. जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन। वैज्ञानिक विधि नव तकनीके, पारिस्थितिकी का संरक्षण। शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक। हर पथ पर है मित्र कृषक की, शिक्षा शोध प्रसार सकल तक। आशा स्वावलंबित भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की। Now I take this opportunity to welcome our beloved director and also convener for today's webinar, Dr. Nachiket Kotwaliwale, sir. For this webinar, sir, I welcome you wholeheartedly. I also welcome Mr. Pradeep Goyal, who is founder and CMD of the Pradeep Metals Limited, Mumbai. We record kare so aa raha, live nahi aa raha. Sir, I am also welcoming you wholeheartedly. For this today's function, we are also having some special invitees. First, I'd like to welcome Dr. C.L. Ram, sir, who is the Executive Director of Food Corporation of India, New Delhi, from side of our institute and our staff. I also welcome Sri Tasyam Lal Saini, who is the President of the Federation of All India Rice Millers Association and also to the Punjab state.
I welcome you, sir, for this webinar. And importantly for the today's webinar, the presenters about the technology, I welcome Dr. D.N. Yadav, Head TOT Division, ICAR-CIPHET. I welcome you, sir, for this webinar. I also welcome the one more presenter, Dr. Shivan Borkar, sir, who is a scientist at Industrial Microwave Research Center, Pradeep Metals Limited, Navi, Mumbai. So I welcome you, sir. I also take this opportunity to welcome all my senior colleagues, the millers, different food processing entrepreneurs, and also the food or grain storage agencies, and all the others who have joined for this webinar. I am wholeheartedly welcoming for you all to this webinar from the institute side and also from our staff side. So next, I'd like to invite our today's webinar convener, Dr. Nachiket Kotwaliwale sir, for the brief about the webinar and also about the sir. Please. सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरे साथ में यहाँ पर जो अन्य महानुभाव जुड़े हैं, श्री प्रदीप गोयल जी, प्रदीप मेटल्स लिमिटेड से, प्रदीप मेटल लिमिटेड से ही श्री डॉक्टर शिवानंद बोरकर, साथ ही हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर FCI के हैं डॉक्टर CL राम, और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया राइस मिलर एसोसिएशन से तरसेम सिंह सैनी जी हैं। आप सबका स्वागत है। मेरे साथी डॉक्टर DN यादव, डॉक्टर गुरु, डॉक्टर RK सिंह और डॉक्टर त्यागी और भी मेरे जो वैज्ञानिक हैं मेरे साथ के सिफेट के और राइस मिलर एसोसिएशन के जो अलग अलग मेंबर्स हैं, आप सबका, और इसके अलावा और भी लोग जो जहाँ ज्वाइन हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि नाम से पता है, ICAR-CIPHET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है। ICAR जिसे कहते हैं, ICAR के अंदर 108 इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे देश में, और उनमें से एक इंस्टीट्यूट लुधियाना में स्थित है। हमारा काम है पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कटाई के बाद में जो फसल है उसको कैसे मैनेज करना, उसके लिए क्या क्या यंत्रों की आवश्यकता होती है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता होती है, उन सबको डेवलप करना और उनको वैलिडेट करना। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हम करते हैं जिनको वैलिडेट भी करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी, उसके बाद में हम पॉलिसी सपोर्ट का भी काम करते हैं। FCI को हमने पॉलिसी सपोर्ट में हेल्प किया है, और भी दूसरे डिपार्टमेंट जो हैं उनको पॉलिसी सपोर्ट दी है। हम लोग टेस्टिंग का भी काम करते हैं। जो मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए हम लोग टेस्टिंग का काम करते हैं। तो इसके साथ में हम लोग फूड टेस्टिंग का भी काम करते हैं। एक लेबोरेटरी है हमारे पास में जो कि फूड प्रोडक्ट्स की भी टेस्टिंग कर सकती है। तो इस तरह से हम लोगों के अलग अलग गतिविधियां हैं, और इन्हीं गतिविधियों के तहत एक हमने कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट लिया था प्रदीप मेटल्स के साथ में, और उस कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट से जो आउटपुट निकल के आया है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हमको लगता है कि जो राइस मिलर्स हैं या जो फूड पैकिंग करने वाले जो लोग हैं, एग्रीगेटर्स हैं, ऐसे लोगों के काम की ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी पे मैं बहुत अधिक नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे साथी डॉक्टर DN यादव इसका पूरी जानकारी आपको देंगे, और साथ ही डॉक्टर बोरकर जो हैं वो भी एक इसका डेमोन्स्ट्रेशन देके और इसके जो इकोनॉमिक्स है वो भी आपको शायद समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिफेट की तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि हमारा पूरा हेतु 2 हमारे मुख्य कार्य हैं। पहला है कि लॉसेस को कम करना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2013-14 में हमने एक स्टडी की थी ऑल इंडिया लेवल पर, और उस स्टडी से निकल के आया कि इस देश में प्रतिवर्ष हम लोग लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खाद्यान्न जो है वो नुकसान कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये सिर्फ वो नुकसान है जो कि किसान से रिटेलर तक के बीच का है। इसके अलावा जो बर्बादी है जिसको हम वेस्टेज कहते हैं, जो हम लोग अपनी थालियों में करते हैं या जो और जगह पे रिटेलर के बाद में रिटेलर के पास में होता है, उसकी कीमत शायद इसके 2 गुना भी हो। उसका अभी एस्टिमेशन ऐसा साइंटिफिक कोई नहीं किया है, लेकिन इस मौके पर मैं आप लोगों को सबको बताना चाहूँगा कि सिफेट का एक कार्य है कि लॉसेस को कम करना, दूसरा कार्य है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो प्राइमरी प्रोसेसिंग अधिक से अधिक किसानों तक हो सके, जिससे कि उनकी इनकम भी बढ़े, लॉसेस भी कम हो,
और साथ में जो पॉल्यूशन हो जाता है बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज के कारण, वो पॉल्यूशन भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, वो भी पॉल्यूशन का स्तर ना ले सके, गाँव के स्तर पर ही प्रोसेसिंग हो जाए। तो इन सारे कारणों या एम्स के साथ में ये संस्थान कार्य कर रहा है। लुधियाना में एक हमारा सेंटर जो फ्रूट एंड वेजिटेबल पे काम करता है, वो अबोहर में भी है। और रिसर्च के साथ-साथ उस रिसर्च या ज्ञान की जो है फैलाना, ये भी हमारा एक काम है। और इसी काम के तहत हम लोग ये वेबिनार्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। पहले भी हम लोग सेमिनार करते रहे हैं, लेकिन फिज़िकल होने के कारण उसकी पहुँच बहुत नहीं थी। अब ये जब ऑनलाइन हो गया है, तो इसकी पहुँच बहुत हो रही है और 50 से 60 लोग तो बहुत छोटी बात है। हम लोगों ने कई बार 2-200 लोगों के आसपास एक ऑडियंस के लिए भी सेमिनार किया है। आज का ये खास है सेमिनार क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग राइस मिल वाले हैं या जो लोग उद्योग लगाना चाह रहे हैं पैकिंग का, रीपैकिंग का या जो एग्रीगेटर्स हैं, ऐसे लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं और केवल एक टेक्नोलॉजी के साथ। वो टेक्नोलॉजी क्या है? माइक्रोवेव का उपयोग करना। और इसके लिए एक खास सेमिनार है और इसके अलावा हम लोग इस वर्ष जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष हमारे आज़ादी को हो गए हैं। 75 वर्ष पूरे हो जाएँगे इस वर्ष में 15 अगस्त को। तो तब तक हम बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं और उन कार्यक्रमों की कड़ी में ये जो राष्ट्रीय वेबिनार है, ये भी एक है जिसमें कि हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं। साथ ही एक सीरीज़ पैरेलली हम और चला रहे हैं जिसमें हम सिर्फ़ विज्ञान के बारे में बात करते हैं। ज्ञान विज्ञान, उसमें हमारी टेक्नोलॉजी चाहे हो, चाहे ना हो, तो हम लेकिन हमसे संबंधित जो ज्ञान और विज्ञान है, उस पर भी हम लोग सेमिनार के देते हैं। तो आज के ये विशेष सेमिनार में आप सबका स्वागत है और मुझे पूरी अपेक्षा है कि जो टेक्नोलॉजी आपको दिखाई जा रही है, आपका उसमें रुचि आपकी बनी रहेगी और ऐसे ही और भी कोई प्रॉब्लम्स यदि आप लोगों की नज़र में हैं तो वो आप हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। ये एक तरीका है हमारा इंडस्ट्री के साथ में और जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनके साथ में जुड़ने का भी। ज़रूरी नहीं है कि ये सब सारी बातें आज ही हो जाएँ। कुछ बातें आगे के लिए भी हम छोड़ सकते हैं। कुछ आपके मुद्दे जो हैं, उस पे आप आगे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये संवाद शुरू करने का एक पहला मौका है, पहला पायदान है और मुझे अत्यंत आनंद है कि बहुत से लोग जो कि राइस मिल इंडस्ट्रीज़ से आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका आज स्वागत है। आगे आने वाले समय में भी हमेशा से आपके लिए सिफेट के द्वार खुले हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं एक बहुत अच्छे सेमिनार को देखने की अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for briefing about the ICAR-CIPHET Ludhiana and also about the webinar. Next, I would like to invite Mr. Pradeep Goyal, founder and CMD of Pradeep Metals Limited, for the remarks and also the role of IMRC in this particular project and the development of this technology. Mr. Pradeep Goyal, sir, please. Thank you very much, Mr. Guru. Thank you, Nachiket ji, for those excellent opening remarks. मैं भी चाहे तो मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ अगर आप चाहें तो बहुत बहुत धन्यवाद नचिकेत जी। आप सबका स्वागत है। श्री राम यहाँ पर अवेलेबल हैं, सैनी जी हैं और बहुत सारे मित्र यहाँ आज इस सेमिनार के लिए जुड़े हैं। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि मेटल्स की कंपनी का मालिक ये राइस के चक्कर में कहाँ पड़ गया। तो मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना बताना चाहता हूँ। मैं बेसिकली मन से तो साइंटिस्ट हूँ। मैंने MIT से अपनी मास्टर्स डिग्री ली थी कई वर्ष पहले और रिसर्च में मेरी बहुत रुचि रही है। ये एक संजोग है कि मैं मेटल्स इंडस्ट्री में काम करने लगा, तो ये रुचि मेरी बढ़ती गई और मैंने एक माइक्रोवेव्स पे आधारित बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने का एक कार्य शुरू किया था 2006 में। शुरुआत तो हुई थी मटेरियल्स के साथ, सिरेमिक्स के साथ और मेटल्स के साथ। हमने एक दुनिया की सबसे पहली फर्नेस भी लगाई है जिसमें हम आयरन ओर को डायरेक्ट आयरन माइक्रोवेव के अंदर बनाने का हमने कार्य शुरू किया है यहीं पे मुंबई में अपनी कंपनी में। और डिपार्टमेंट ऑफ स्टील ने उसको थोड़ा फंड भी किया था। CSIR बहुत इंटरेस्टेड है उस टेक्नोलॉजी में। हम अलग अलग विषयों पर शोध करते रहते हैं और ऐसे ही एक किसी मीटिंग में मुझे ये ध्यान में लाया गया था कि
जो राइस और जितने भी दूसरे ग्रेन्स हैं उनको पेस्टिसाइड, उनके जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए सिर्फ टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वेदर वो फॉस्फीन है या मिथाइल ब्रोमाइड है। तो और WHO ने भी उसको बैन किया हुआ है। तब मेरे ध्यान में आया कि माइक्रोवेव एक ऐसी वेव है जिससे हम इसका शायद उपयोग कर सकते हैं। तो उससे हमने इस कार्य की शोध का शुरुआत की, काफ़ी हमें उसमें सक्सेस मिली। तब हमने तय किया कि हम इस शोध को वैलिडेट करवाएं किसी ऐसी संस्था से जो इसी पे काम करती है, और सहयोग से हमें ICAR-CIPHET से संपर्क हुआ, और वो भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा हमें ये संपर्क कराया गया, ताकि वो भी चाहते थे कि जो पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज होती है उसको हम कैसे रोक सकें। तो हमने अपनी सारा इक्विपमेंट वगैरह डिजाइन करके उसको बनवाया और उसमें इस सारे कार्य को किया। तो मुझे खुशी है कि ICAR-CIPHET के 2 साइंटिस्ट हमारे साथ लगातार 2 साल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे उसके रिजल्ट्स आए हैं। तो मैं अत्यंत खुश हूँ कि ये टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि आगे के लिए हम सबके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। इसमें कोई राइस का, व्हीट का या किसी भी ग्रेन का कोई न्यूट्रिशनल नुकसान नहीं होता है, परंतु ऐसा कार्य होता है जिससे कि आगे 6-8 महीने 1 साल तक उस ग्रेन में कोई कीड़ा ना लगे। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगा। मेरे माननीय साथी डॉक्टर शिवानंद बोरकर आज मेरे साथ हैं, वो आपको इसका वीडियो भी दिखाएंगे कैसे होता है। बाकी हमारे जो साइंटिस्ट साइफेट के हैं वो भी आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो बस इतना ही मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स कहूँगा। हमारा प्लांट यहाँ नवी मुंबई में है और आप सबका स्वागत है। आप कभी भी आके इसको देख सकते हैं। आपके सामने हम इसका एक्सपेरिमेंट दिखा सकते हैं, और जैसा भी होगा उस डिस्कशन के बाद हम और अगर इस पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स किसी को चाहिए हम वो भी करने को तैयार हैं। तो आप देखिए इसको और उसके बाद हमारे से संपर्क करिए, और हम आपकी अगर कोई समस्याएं हैं तो हम उनको दूर करने में समर्थ होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने अपना कीमती समय इस वेबिनार में आने के लिए दिया, और मुझे आशा है कि आप सब को इसमें इस समय व्यर्थ नहीं हुआ तो सफलता ही मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir, for briefing out about this IMRC and the background of this particular technology development. जब सब हिंदी में ही बात कर रहा है तो मैं भी थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि हिंदी में ही हो जाए। मेरा इतना हिंदी अच्छा नहीं है, तभी तो मैं इंग्लिश में चल रहा था। अब मैं अगले आमंत्रित करना चाहता हूँ कि इस हमारा टेक्नोलॉजी के बारे में जो प्रेजेंटेशन है उनमें से मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा कि डॉक्टर DN यादव सर को कि इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एक फ्लो के तरफ से दोनों प्रेजेंटर ने एक के बाद एक शुरू करेंगे और उसके बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। आई इनवाइट डॉक्टर DN यादव सर। Sir, shall I share? Yes, no, Dr. Guru, thank you. I had PPTs, I will share. Yes. Okay. So I think this is visible. Yes, sir. Keep it slideshow mode, sir. It is in slideshow mode only. Now it is okay. Go to first slide, sir. Yes, sir. Okay. Respected Director CIPHET, Dr. Nachiket sir, and Mr. Pradeep Goyal, founder and CMD Pradeep Metals Limited, Mumbai. My colleagues, Dr. Borkar, Executive Director, Dr. C.L. Ram, FCI, headquartered New Delhi, and Sri Tarsen Lal Saini ji, President, the Federation of All India Rice Millers Association, from India, as well as he is also President of the Punjab chapter, and all my participants, or you can say stakeholders of such kind of technology, or rice millers, entrepreneurs, or those research scientists, those who have joined today, my colleagues from the ICAR-CIPHET Institute, Dr. R.K. Singh, Dr. Tyagi, and Dr. Narsaya, Dr. Mridula Madam, and all other scientists who have joined today's webinar. I will give a brief about the how
actually we have developed this microwave-based disinfestation system for the food grains, especially. Actually, we have taken rice and wheat as an example, but this technology can be extended to others also, especially in the pulses. I will use a mixed language, Hindi and English both together, so that everyone can understand in better way. हम लोग ICAR-CIPHET, we are the agricultural scientists, as our director has told you that we are working on the post-harvest sector, and Mr. Pradeep Goyal, who is the CMD of the Pradeep Metals, as he told, working in the metal industry. But apart from them, they use a lot of microwave energy in the metal industry, and I think from that it came in their mind about the use of this microwave technology in the agriculture sector. We both, you can say, our institute and industry, we work together last 2 years and conducted a lot of experiments at ICAR-CIPHET Ludhiana, as well as in the Mumbai itself, on site in the industry, and came out with the certain results, which I will speak slightly about that, and much more about Dr. Borkar will explain about this technology. It's not moving. Yes. So the broad objective of our this you can say work. I will not say in kind of project, but this is a kind of together work. We have taken rice and wheat as an example, and the objective was that this optimization of all kinds of process parameters, for basically to disinfect the grains. Means it contains larvae, it contains egg, it contains adults also. So all those need to be killed while keeping the quality of the grain intact. You can say, although there should be very least or insignificant changes in that grain quality. Otherwise, there is no meaning, because we know there is a lot of technologies available which we use to disinfect the food grains. And microwave is also on the basis of heat energy only, but thermal energy has the limitation. Use of thermal energy in killing the insect or disinfecting has the limitations of, because it deteriorate the quality of grains. But the challenges was that to disinfect the grains as well as to making the to keeping the intact quality of the grains. And after that treatment or optimum conditions, this storage or shelf-life study of the grains. So we have conducted up to 12 months at ICAR-CIPHET, as well as we kept in the industry also after testing it at pilot scale. We know, I will not much more talk about this, because our director has told around 1 lakh crore rupees we lost annually due to post-harvest losses. That losses occurs at the various stages, but those whatever the losses is during the storage is around 12 to 16 million tons, and it was about 7,000 crores rupees. So this much losses are there, and this is apart from this storage losses in the godowns or warehouses. There is a rejection of the you can say the quantity of the food grains on the port also, because of larvae or insect or its excreta. We are not able to export properly. So that also a kind of limitation we had. So in nutshell, losses, you can say much more. Apart from the quantity losses, losses are also in the form of qualitative. That is a very bigger challenge to estimate the qualitative losses. And there is a reduction in the nutritive value of the food grains. In case of all rice, wheat, pulses, due to moisture accumulation, there is an increase in the moisture, because this, especially the wheat and intact grains, which have the metabolic activity, and they had the moisture, and that will comes outside the moisture, and that will accumulate on the surface, which leads the growth of the various
microbes as well as fungus. During deterioration, free fatty acids also increases, and due to the excreta of the, or you can say the dead insect body, dead body non-protein nitrogen also increases. pH also decreases. So there is a lot of things which happens during the storage. Because of that, the losses are in the quantitative as well as in the qualitative terms. We know this insect infestation problems are at various outlets, like in the grain storage, medium, or either it is large scale, or in the food markets also. Whatever commodities, this time we had big malls, मेगा मार्ट्स, वेयर दे कीप, हमको पता है, वो हमने देखा हुआ कभी कि वहां पर दाल जो 1 केजी की 2 केजी की पैकेट्स में रखते हैं, कभी कभी वो शॉप मार्ट वाले को भी और मॉल वाले को भी नहीं पता है कि उसकी दाल में कीड़े लगे हुए हैं। कस्टमर जब जाता है उसको देखता है तो उसमें कीड़े रहते हैं, तो वो भी एक बिग प्रॉब्लम है, बिकॉज एक ह्यूज क्वांटिटी है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डील इन दैट केस। एंड एक बार इंसेक्ट लग गया तो उसकी क्वालिटी डेफिनेटली डिटेरियोरेट हो जाती है, सो दैट ही कैन नॉट गेट द सेम प्राइस अगेन, either in spite of cleaning and drying all those things. And it contains some parts of the insect dead body, excreta as well. Farm level पर there is a problem. Storage है small scale, home scale पे भी है, वहाँ भी 2 महीने 3 महीने के अंदर we saw insect growth or larvae or eggs. Even the food processing industries, they used to जो मिलर्स हैं हमारे भाई जुड़े हुए हैं जो लोग आज, तो ये भी स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, एंड ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज 3 months 4 months के बाद उसमें भी इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन होता है, स्पेशली वीबिल्स। आफ्टर मिलिंग ऑल्सो राइस को जो यूज करते, राइस में भी हमने देखा होगा कि हम लोग घर में कभी पैकेट्स लेके आते हैं, चाहे वो इंडिया गेट का हो चाहे जिसका भी हो, 3 months के बाद जब घर में अगर कभी हमने रख दिया घर के अंदर, और 3 months के बाद हम 25 kg का पैकेट जब ओपन करते हैं तो उसके अंदर लार्वी होते हैं इंसेक्ट के, तो ये मेजर चैलेंज है। एंड this I hope this millers especially due to this problem also they are facing the export business, so that is also one of the issue that can be handled here by using this microwave based technology. Under this we have common जो insects हैं, they are the beetles हैं, चाहे वो floor beetles हो, grain beetles हो, और weevils हैं, मॉस हैं। दिस हम सबको पता है कि बिकॉज ये डे टू डे लाइफ में हमको देखने को मिलते हैं। एंड all this has insect has especially 4 stages. First is the egg, and thereafter comes larvae and pupa and adult. So जो larvae है, that is the least sensitive, you can say the it is the least or easiest to kill larvae. बट प्यूपा जब वही लार्वे में कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में, तो प्यूपे को किल करना टफ है, बिकॉज इट रिक्वायर्स स्लाइटली हायर हीट ट्रीटमेंट इफ वी टॉक अबाउट द हीट, एंड एग्स आफ्टर दैट फॉलोड बाय एग्स एंड एडल्ट्स। सो क्योंकि जो एग है और प्यूपा है, इसके आउटर कवरिंग में एक केसिन होता है, जिसकी वजह से इससे जब हम हीट करते हैं और फ्यूमिगेट करते हैं तो इजीली इट इज नॉट बीइंग killed. So that's why we have to give certain kinds of pre-treatments, and that will explain just to next slides, and then go through the heat treatment so that temperature should not go much more. If it will go, it will deteriorate the quality. So all these egg, larvae, pupa and adults, we have taken all kinds of common insects in our study, and all 4 stages. We had our scientist associated with us, entomologist Dr. Guru, the entomology background, and we have taken all 4 stages and studied. So how we have studied the threshold level actually, at what particular temperature it is getting inactivated, and further it will not proliferate into or increase its population. So these are the some common insects like rice weevil, abra weevil, lesser grain borer, rice moth. So wheat and rice, almost
all kinds of common insect we have taken under the study, and these are also common in case of pulses also. We know we had जो physical means है उसको disinfect करने के लिए like chemical treatments है, aluminum phosphine अभी सर ने बताया, methyl bromide already have been banned, and पूरा FCI में I think for fumigation purpose in godowns also we use aluminum phosphide which releases phosphine gas. There are certain limitations of these chemicals also. Then natural products में inert dust वगैरह हैं, so and mechanical methods में we know mechanical devices are there, traps are there, but they all has their own limitations. They're not, I can say, completely disinfect the grain or pulses. So either use biological control method or botanical derivatives. Now natural is coming, but they has their own limitations. Even modified hermetic or controlled atmosphere packaging or storage is also one of the methods which we are studying. Radiation, ionizing. So there is a huge number of different kinds of methods are there. In that method, the dielectric heating or microwave heating is one of the promising method, you can say, because this is based on the dielectric properties of the insect as well as of the grain. And commonly we have seen we are using the microwaves in our home also, in the industry also. In European country, if you go, there is a huge number of application of the microwaves in the food processing sector. In India, only we have the domestic kind one. We know the applications. We for the boiling water, tea, or for warming tea, and various applications at home scale. So such a kinds of quick method is available. Waves are there which can quickly generate heat, and they will not allow to raise you can say the much more temperature in shorter period of time, because my colleagues Dr. Sivanan Borkar, he is also very senior person who is working from the last 20-30 years in the microwave systems, and they are very well established microwave you can say research center in Navi Mumbai. So further to elaborate about the microwave properties and these all kinds equipments, its videos, showing through the videos, I invite or request Dr. Sivanan Borkar to proceed further. Dr. Borkar, please. Unmute कीजिए sir, unmute. Dr. Borkar, unmute कीजिए. Yes. Yes. Good afternoon, all respected delegates. This is Shivanand Borkar is explaining about our new technology, what we have developed for in disinfestation of the food grains. Now, Dr. Yadav covered very briefly about the problems faced during a long storage of the food grains. And also he has briefed about the number of conventional processes used for controlling these insects in food grains. Now I will just introduce to a new technology, that is the microwave processing. But before that, I would like to just highlight some main limitations of the conventional process. So fumigation is one of the most popular treatment. It is used for food grain disinfestation, but the problem is it requires minimum 1 to 5 days to kill all the insects, and in this process only adult insects are killed. Then second is some of these chemicals are really very poisonous, like methyl bromide, which is already phased out, but still it is used some poisonous residues on the grains, and these are polluting environment as well as they are depleting our ozone layer. Then one more very important point is these conventional processes are not able to control a moisture content in food grains. Now it is well established that if you can maintain less than 12% of moisture in the grains, then you will able to control weevil growth
but you will not able to totally eliminate it, but you will able to control at least. Then sun drying is a very common and one of the cheapest process available, and it is being used in all our villages and all. But this is a useful for a very small quantity. For large quantity, it is a bit problem, and there is another chances of the contamination from dust as well as from foreign materials. And there are some new emerging technologies are also there, like a low temperature treatments or atmosphere control. But these are the cumbersome and they also adversely affect on the grain properties. That is why we are recommending microwave processing. So why microwave processing? First reason is microwave kills all stages of insect life cycle, because all these insects, they contain a moisture, and microwave selectively attack only moisture part. It doesn't heat grains. So you can kill all stages of the insect. Now in conventional fumigation, only adult insects are killed mostly, and part of the some of the insects in other stages will get killed, but they are totally not eliminated. But microwave, you can eliminate all stages of insects. Then second is a very short time exposure required. Now in conventional, as I told, 1 to 5 days required. But in very hurry or somebody wants to immediately export something, you cannot do it. But here in microwave, the exposure time is just less than 2 minutes. So immediately you can expose in microwaves, pack it and send it. So this is another very major advantage. Then third advantage is that it is not hazardous. It doesn't leave any its footprint on hazardous footprint on grains. Then this is a highly energy efficiency, because only it attacks only moisture. Your around surrounding everything is almost at a room temperature. So the energy whatever is transmitted is only used for heating or attacking those enemies only. Sir, back. Yeah, 1 minute. Okay, then it due to very short exposure time and control of process parameters, it maintains its quality. So this is very important, especially in case of basmati type rice, where you need a fragrance as well as you need not break those long grains. So this is very well maintained in this, which this results, some of this it will be shown you by CIPHET people. Now, as this is a microwave process, it can be automated very easily, and there is no pollution, and it's a green process, so it complies with the international environmental rules. Next. So what is a microwave? What are the microwaves? Now microwaves these are the electromagnetic waves. Even the what cell phone we are using, that also is working on a microwave frequency only. Now if you see, now this is a visible range. So yeah, actually you can see that this is a light where we can see the things. Now if you go to left side, these are the ultraviolet, and right side this is the infrared. Now beyond the far infrared and the radio waves, this microwave band remains. Now this microwave band is actually, it is from 30 gigahertz frequency to 300 megahertz, but they are having a different types or different bands are there. We'll not discuss this in more detail, but how microwave interacts with the material, that will be shown in the next slide. See, as I told, microwave is a electromagnetic waves. So these are they are moving like a waves. So they are traveling waves. So here it goes to maximum